अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पहले तो मैं आप लोगों से माजरत करूंगी कि जो प्रीवियस मैंने MGT401 की वीडियो अपलोड की, मेरी फ्रेंड ने वो असाइनमेंट दी थी मुझे एंड बाय मिस्टेक वो असाइनमेंट रॉन्ग थी और उस टाइम मैं अपलोड कर चुकी हुई थी। फिर इस वजह से मैं उसे रिमूव नहीं कर सकी, लेकिन ये जो अब मैं सोल्यूशन पोस्ट कर रही हूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट है और मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ क्योंकि हम लोग भी ज़ाहिर सी बात है इंसान है और हम लोगों से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये नहीं कि हम न्यू स्टूडेंट्स को बहकाना चाहते हैं या उन्हें गलत तरफ माइल कर रहे हैं, ये नहीं है। हमारी ये भी कोशिश है कि हमारा भी चैनल तरक्की भी करे और लोगों की हेल्प भी हो। हमने इसीलिए तो इसे बनाया है। ज़ाहिर सी बात है हम गलत गाइड करके तो किसी को कुछ भी नहीं ले सकते, ना देना चाहते हैं। तो जो मुझसे मिस्टेक हुई उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ। नेक्स्ट मैं आपके सामने ये कहूँगी कि मेरा चैनल वर्चुअल एक्सपर्ट है, राइट, और मैं इकरा भट्ट हूँ जो आपके सामने ये वीडियो फ़िलहाल एट अ सोल्यूशन लेके आई हैं। और मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको अगर हमारे चैनल में कोई भी मिस्टेक नज़र आती है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा, मैं आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सोल्यूशन है, जाहिर सी बात है हमारे पास मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि जब भी कोई असाइनमेंट आती है तो आप हमें उसकी क्वेश्चन फाइल भेज दिया करें, लेकिन कोई भी क्वेश्चन फाइल नहीं भेजता, इसलिए मेरे पास जस्ट सोल्यूशन फाइल है। एज पर IAS.38 एन इंटेंजिबल एसिड यानी जिसे हम टच नहीं कर सकते कैन बी रिकग्नाइज्ड ईदर एट कॉस्ट मॉडल और एट रिवैल्यूएशन मॉडल if MPL company OPTS to cost model, then the vaccine will initially be recognized at its cost 160 million and then will be carried at its cost less accumulated amortization and accumulated impairment loss for the 5 next year, and vaccine B will be initially be recognized at its cost and will be carried at its cost less amortized and impairment if any for the rest of the first of the acid. No amortization will be calculated for the vaccine B. If MLP OPT to revolution model, then vaccine A will initially be recognized at cost and will be carried at its revalued amount, less subsequent amortization and subsequent impairment loss. Vaccine B will be recognized at its cost and then will be carried and its revalued amount, less any subsequent impairment loss. Subsequent का मतलब होता है अक्सर impairment, एक होता है रिपेयर होना, एक होता है impairment loss, यानी ऐसा लॉट जो मतलब ऐसा नुकसान जिसको भरा नहीं जा सकता. A regular impairment test will be conducted on both vaccine by comparing of their carrying amount with its recoverable amount. 6 million amount on TV advertising to boost sales with fall in the category of marketing expenses. The 6 million amount as a whole will be deducted from gross profit in statement of profit and loss. उसके आगे आ रहा है पॉइंट जो 3 है, as the training cost is especially for the vaccine production, therefore the total amount of 5 million will be made a part of vaccine's cost. The amount of 5 million will be split between both vaccines A and B. जो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसका सॉल्यूशन है लैंड, ऑफिस बिल्डिंग एंड फिक्सचर एंड फिटिंग. लैंड, we have discussed about land first. Okay, land has been acquired on January 1, 2016. 2 years and 6 months have passed since the acquisition. As the land is being carried at cost, therefore no accumulated depreciation will be deducted. As the land does not
depreciate, the land will therefore be carried at its original cost 80,000. And then we are talking about office building. The office building is ready to use after 30 January 2018, which is the year end. The building will be carried at its cost 50,000 as at 30 June 2018 in the correct year, and no depreciation will be charged. Instead, depreciation will be charged in the next year. Fixture and fitting. Accumulated depreciation at 1 July 2018 is equal to 10,000 as at 30 June 2017 is equal to 6,000 minus 1,000 multiplied by 10% is equal to 5,000. And now we are deducting the value of office building. Office building value मतलब अब हम ऑफिस बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको हम डिडक्ट करने लगे हैं फिक्सचर एंड फिटिंग्स में से. So we are deducting both values, and the answer we are getting is that WDV is equal to 45,000. On 30 June 2018 is equal to 45,000 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10% से, राइट. 10% से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 4,500 आ रहा है, and we are also deducting 4,500 minus 45,000 minus 4,500. तो हमारे पास WDV आ रहा है 40,500. The fixture and fitting will be carried at a value of 45,500 for the year end 30 June 18. Thank you for watching the video. My name is Ikramat and my channel is Virtual Expert. Please subscribe my channel. If you like the video, then press on like button, and if you want the solution in Word file, then comment your mail ID in the comments. I hope you are fine and you like my video. Thanks friends. Allah Hafiz. God bless you all.